Esteemed guests are kindly requested to be seated. We are about to begin the program very soon. प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। Good morning and namaskar to all our esteemed guests today. I am Swati Chauhan. And I am Anshul Puria. And on behalf of Government of Madhya Pradesh, we welcome you all to the inaugural session of Special Think 20 Conference in the beautiful city of Lakes, Bhopal. This T20 conference is on the theme Global Governance with Life Values and Well-being, fostering cooperation in framework, finance, and technology, where academicians, experts, distinguished speakers, and practitioners will come together and give their valuable insight on the subject. Prime Minister Narendra Modi's message of healing, harmony, and hope for the G20 would shape activities and deliverables of the Indian presidency of the G20. India is poised to adopt an agenda of the G20 which would create enabling conditions for fundamental mindset shift to benefit humanity as well as articulated by the Prime Minister. The Think 20 is one of the engagement groups of the G20 that was launched during the Mexican presidency in 2012. It served as the ideas bank for the G20, providing a platform for the scholars to deliberate and articulate policy recommendations on critical global challenges. As part of the India's T20 processes, a special conference on global governance with life, values, and well-being, fostering cooperation in framework, finance, and technology is organized today. Now, we would like to invite Mr. Pratik Hajela, Chief Executive Officer, Atal Bihari Vajpayee, Institute of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal, for the welcome remarks, please. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan ji. A very good morning to all of you. It's a matter of great honor and privilege for me to welcome you all to the city of Bhopal, which is the first city to host a G20 event in the state of Madhya Pradesh. I very warmly welcome you all to this place, and I hope and wish that you have very meaningful deliberations for the next couple of days and have a very pleasant stay at Bhopal. I think it's pertinent to mention, with reference to the topic, that the state of Madhya Pradesh is the ideal location for hosting an event on this title, Global Governance with Life, Values and Well-being. As lifestyle for environment is depicted by roughly around 1/5 of the population of the state who are tribals, who live in harmony with the environment. Values is something which is again intrinsic to the people of Madhya Pradesh. Panchkarma is a system of wellness which is a part of Ayurvedic treatment and practiced across the state, length and breadth of the state. With these few words, I very warmly welcome you all to this two-day conclave. Thank you. Sir, now we would like to invite Sri Shiv Shekhar Shukla, Principal Secretary, Tourism and Managing Director, Madhya Pradesh Tourism Board, Bhopal, for their valuable inputs. Respected Honorable Chief Minister, sir,
Honorable Vice Chairman Sri Suman Beri ji, Niti Aayog, respected Sri Harsh Shringla ji, uh, ex-Foreign Secretary and Coordinator of G20, respect members on the dais, distinguished delegates, and thought leaders from all over the world. Greetings from the cleanest and greenest heart of incredible India. Welcome you all. I'm also very happy to share with you today in the morning that this special T20 event in this venue is being powered by clean and green energy. I would like to draw your kind attention on the tagline of India's G20 presidency. It talks of one world, one family, one future. That is universal oneness. In Sanskrit, there is a word aham, means me. There's another word idam, means this, that everything other than me. And so there is a sense of duality in everything we see, we perceive. It's divided between me and other than me, that is the world. And this duality is the root cause of all the conflicts and existential challenges before humanity today. If me somehow expands to encompass everything other than me, that is the whole world, and all becomes one, that takes care of all conflicts. This principle of non-duality and this sense of oneness with everyone and in everything is all pervasive consciousness. This thought process is the essence of Vedanta and is called Advait principle. Honorable Chief Minister, sir, is not only a philosopher himself, but is also an ardent Advait Vedantin. He resolved on 9 February 2017 to transform Omkareshwar into a global center of spreading the message of this universal oneness by creating a unique Ekatma Dham. This Ekatma Dham shall pay tribute to the legacy of Acharya Shankar by celebrating the site of his spiritual awakening and promoting his philosophy of Advaita Vedanta through various initiatives. Today, we are very proud and blessed that Honorable Prime Minister has set this universal oneness as the core and the theme of G20 convention. I would now request all of you to go through a small film on this Ekatma Dham initiative of Honorable Chief Minister, under whose visionary leadership this project is taking shape in Omkareshwar. Thank you very much. न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् The infinite cosmos of Bharatiya Sanskriti is filled with shining stars and constellations, the brightest of which appeared centuries ago in the small village of Kaladi in Kerala. Shankar, a child who set off on a journey to Omkareshwar, treading 2,000 miles of wilderness and extremities to meet his guru, Govind Bhagwatpad, at the age of just 8. Initiated by his guru Shankar, now known as Shankar Bhagwatpad, embarked on a Digvijay Yatra, a grand tour of the land of Bharat. He went on to establish the 4 great mutts in all the 4 corners of Bharat and revived ancient temples along his way. The worship of Panchadevta and the Dashnami sannyasi tradition
was initiated by Shankar, breathing a new life into the withering Sanatan Dharma Parampara. Shankar Bhagavad was the most exceptional cultural unifier and exponent of Advait Vedant that Bharat has ever seen. He united India through a singular cultural thread and came to be revered as Adi Guru. Today, a new flame of his Advait Vedant is being reignited in Omkareshwar, the Gyan Bhumi of this great soul. अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे और आम आदमी भी उसे समझ पाए, जनमानस उससे प्रेरणा ले पाए। इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। A magnanimous 108 feet tall statue of oneness of Adi Guru Shankaracharya in his child form will be consecrated to enlighten the whole world with Vedanta philosophy from Mandhata Parvat. आप अद्भुत बात देखिए, जैसे इस विचार का प्रकटीकरण मैंने किया संतों के सामने, अपूर्व उत्साह की लहर फैल गई। सारे श्रेष्ठ संतों ने कहा कि निश्चित तौर पर ये करना चाहिए, हम साथ हैं। In the true spirit of Advait, the great saints of Bharatvarsh led the Ekatma Yatra, the journey of oneness, collecting metal required for the statue of oneness, soil and water from more than 23,000 Gram Panchayats of Madhya Pradesh. Crores participated, and the grand initiative culminated on 22nd January 2018 as the Ekatma Parva, where the Bhumi Pujan for the statue of oneness was conducted. मूर्ति के साथ साथ ये विचार आया कि अद्वैत लोक बनाया जाए और अद्वैत लोक के साथ आदिगुरु शंकराचार्य अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बने, जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी और दुनिया में भी एकात्मता के भाव का प्रचार प्रसार करे, ताकि मनुष्य और मनुष्य की दूरियां समाप्त हो जाए। और फिर ये प्रकल्प बना एकात्म धाम का प्रकल्प। State-of-the-art Shankar Museum, named Advait Lok, an international Advait Vedant Institute, will be established under the guidance of the Sant Samaj of India. In the coming years, modern laser, light, water, and sound shows focused on the knowledge of Upanishads will become the center of attraction for thousands of devotees visiting every day. Advait One, spread over 36 hectares, will preserve the natural greenery of Omkareshwar. On the other bank of Narmada, 4 important education centers, Gurukul, Library, and Sharda Mandir, will be built under the International Advait Vedant Institute. Today, the world is troubled with wars, conflicts, and merciless exploitation of Mother Nature. Under the physical manifestations of these problems lies the fundamental ignorance of duality. Dispelling these differences with the light of Advait Vedant will usher the world into an era of peace and bliss. मैं आप सबसे अपील करता हूं, अद्भुत एकात्म धाम बनेगा। एकात्म की यात्रा लगातार जारी है। विश्व शांति के लिए, मनुष्य मात्र में भेदभाव की समाप्ति के लिए, धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बनाने के लिए आप इस एकात्मता की यात्रा में हमारे साथ शामिल होइए ना। आइए, आप भी ओंकारेश्वर एकात्मता धाम पधारिए। Acharya Shankar's Gyan Bhumi calls upon us. The message of oneness calls upon us. Welcome to Ekatma Dham, a global center for oneness, to universalize the timeless wisdom of Advait Vedant. Shivoham, Shivoham, Shivoham.
मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् Such a wonderful movie on Ekatma Dham. Now, We are having an important announcements. We are having translating devices are here. Those who are in need of it, please use that. And channel 1 will translate Hindi to English and channel 2 will translate English to Hindi. Thank you. the translation devices are available in the table behind you. And those who are standing are requested to take their seats on the first floor, please. Now, moving on with the program, to set the context, we would like to invite Professor Sachin Chaturvedi, Director General, Research and Information System, New Delhi, and Vice Chairman, AIGGPA and Madhya Pradesh Niti Aayog, Bhopal. मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से सफलतापूर्वक निकालने के बाद नए आइडियाज के लिए हमेशा प्रयत्नशील हमारे लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर सलेमत सोदरसोनो, the dean of the T7, which is the G7's representative think tank group, Dean Sunabasan, somebody who has seen the private sector with Shell, led the National Council for Applied Economic Research, was part of Bruegel, widely traveled, extremely accomplished, our vice chairman of the National Institute for Transforming India, the Government of India's think tank, respected Dr. Suman Berry. Our great partner in this initiative, UNICEF's South Asia head, George. It's a pleasure to have you here. I am also extremely delighted to have our chief coordinator for G20, under whose leadership, along with Sherpa, the process of the G20 has evolved, the former Foreign Secretary to the Government of India, Ambassador Harsh Shringla, the chair for the T20 and Director General of Manohar Parrikar Institute for Defense and Strategic Analysis, Ambassador Sojourn Chinoy. My colleagues here, Mr. Shiv Shekhar Shukla, Mr. Pratik Hajela, Swatantra Kumar, Lokesh, and Indrani, who would be proposing vote of thanks, but also our colleagues who are off the dais, Dr. Rajiv Kumar, the former Vice Chairman, Niti Aayog, Ambassador Sudhir Devre, Chair for the Research Advisory Committee for RIS, Governing Board members, the former Deputy Governor of Reserve Bank of India, Ms. Shyamala Gopinath, Madam Sindhushri Khullar. I am also extremely happy to notice presence of Shri Charan Singh Ji, the President of the Chairman of the Punjab and Sindh Bank, Ambassador Netherlands, my very dear friend Martin, my colleagues from South Asia, Brother Mustafizur Rahman, Debuda, our colleague Dr. Khatun and Poshraj. We are extremely privileged to have all of you here. This process is unleashing a new model for economic development. भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसमें भारत पर्यावरण के क्षेत्र में अपना नेतृत्व दे रहा है। पेरिस कन्वेंशन में जो भारत ने यू टर्न करके पूरे विश्व को एक नेतृत्व दिया 2015 में, वो आज भारत का पर्यावरण पर नेतृत्व लाइफ के रूप में उभरा है, जिसका की कल्पना प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने रखी है।
लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण के लिए जो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन किस ढंग से हो सकता है, क्या ऐसे स्वरूप हो सकते हैं जिसके बारे में हमने विचार करना चाहिए, कैसे हम सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी विकास के मॉडल को सामने रखें, वही आज का हमारे इस 2 दिन के जो सत्र हैं उनका उसी अंदाज में हम लोगों ने स्ट्रक्चर किया है। इसमें लोक केंद्रित और विश्व आर्थिक संवाद, ये दोनों को इस्टेब्लिश करने की बात है। जो भारत का विकास का मॉडल पिछले कुछ वर्षों में निकला है, हम लोगों ने भारत में 400 million new bank accounts since 2015 India has opened. डिजिटल ट्रांजैक्शंस, अगर हम सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो चीन में हो रहे हैं उसका 3 टाइम्स ज्यादा भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनमें जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको सबको अगर जोड़ दिया जाए तो उससे 7 गुना ज्यादा भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। 30 मिलियन लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग अभी तक प्रोवाइड कर दी गई है। 2 बिलियन कोविड वैक्सीन भारत ने सप्लाई करे हैं। तो विकास का ये जो सार्वभौमिक सर्वसमावेशी विकास का ये जो मॉडल खड़ा हुआ है, इसके लिए भारत लगातार प्रयत्नशील है। भोपाल में, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, भोपाल एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल के रूप में उभरे, और इसके लिए आप सभी से मेरा निवेदन होगा कि जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति संस्थान है वहां पर भी विजिट करें, और आप देखेंगे कि किस तरह से ये बदलाव तेजी से हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है। और तब जब पूरे विश्व में हम देखते हैं कि करीब करीब 4 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन लोगों को डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, 4 बिलियन लोगों को विश्व में डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है। 2 बिलियन लोग विश्व में ऐसे हैं जिन लोगों को बैंक की सुविधा नहीं है। जो भारत में तेजी से आंकड़े बढ़े हैं बैंक की, जैसे मैंने कहा कि 400 मिलियन हमने भारत में नए अकाउंट खोले हैं, विश्व में 2 बिलियन ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास में बैंक की सुविधा नहीं है, और 130 देश ऐसे हैं जहां पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो भारत ने क्रांति खड़ी करी है पेमेंट आर्किटेक्चर में, जिसमें रिजर्व बैंक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने नई भूमिका निभाई है, इसलिए ये आवश्यक है कि जिस ग्लोबल साउथ की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस साउथ साउथ कोऑपरेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, आज यहाँ पर दिल्ली प्रोसेस से जुड़े हुए कई लोग यहाँ पर हैं, मैं सबके नाम अलग अलग नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उन सबका आज स्वागत है। और जो हम साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात वर्षों से RIS करता रहा है, उसमें मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण अंग है, डॉक्टर नागेश यहाँ पर हैं, लगातार उनके प्रयासों से RIS ने साउथ साउथ कोऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय कम है, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। G20 एक कारण आज हमारे लिए यहाँ इकट्ठा होने का हुआ है। T20 थिंक 20, जैसा आप जानते हैं, एक एकेडमिक मीटिंग है, एक सारे एकेडमिशियंस को एक मंच पे लाने का प्रयास है। ये कोई नेगोशिएटिंग ग्राउंड नहीं है जहाँ की संस्थागत या राष्ट्रगत प्रतिनिधि हो। आज यहाँ पर हमारे आईटेक के अफ्रीका के जो 28 लोग हैं, उनका भी मैं आईटेक के सारे अपने पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जिस लाइफ के प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, उसमें 5 बातें प्रमुख हैं। सबसे पहला, जब हम लाइफ कहते हैं तो उसमें सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये एक महत्वपूर्ण है। जो टिकाऊ कंजम्पशन और प्रोडक्शन हो, उसी से जो हमारे बिहेवियर में, इंडिविजुअल बिहेवियर में, संस्थागत बिहेवियर में जो परिवर्तन आना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। जैसा शिव शेखर शुक्ला जी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं एक दार्शनिक के रूप में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। जो एकात्म धाम की बात आपने फिल्म में देखी, उसी के चलते इस कार्यक्रम को पहली बार T20 में आज तक कभी भी फिलोसोफर्स को नहीं जोड़ा गया। हमने यहाँ पहली बार ऐसा प्रयास किया है। डॉरिस हैं, थॉमस फॉगी हैं, जेफरी सैक्स हैं, ये लोग सभी डेवलपमेंट की जो फिलॉसफी है उसके बारे में बात करेंगे। और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा एथिक्स का है। एथिक्स फाइनेंस में हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एथिक्स को फॉलो करें, टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एथिक्स को लेकर के आएं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में लेकर के आएं, जो ग्लोबल वैल्यू सिस्टम है उसके जो नॉर्म्स हैं उसको हम
बदलने का प्रयास करें? क्या हम जीडीपी से आगे जा सकते हैं, वेल बीइंग इंडेक्स लेके आ सकते हैं? क्या ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की नई अप्रोच जो फोर सेक्टर मॉडल के रूप में निकलेगी? हीरद यहाँ पर आए हुए हैं वॉशिंगटन से, वो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आईएफआईस, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, इसके बारे में चर्चा होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हमने 5 गोल लिए हैं, उसमें वीमेन लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन है। गोल 11 में अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण है, उसको समाज के साथ जोड़ना, समाज की जिम्मेदारी, और मध्य प्रदेश स्वयं इस संबंध में एक आदर्श उदाहरण है, जब प्रदेश के सारे नागरिकों को अपने अपने नगर पे गौरव करने का एक अनूठा प्रयास मुख्यमंत्री जी ने सामने रखा है। गोल 3 में हम वन हेल्थ की बात करेंगे। गोल 7 में ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स की बात होगी। गोल 17 में जहां हमने जीआईजेड के साथ पार्टनरशिप करी है, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की बात होगी। जो एलडीसी का ग्रेजुएशन है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये कंट्रीज जो अभी तक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थे, उनका ग्रेजुएशन 2026 तक होना है। तो ये जो ग्रेजुएशन एलडीसी का होना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये भी अगर G20 चिंता करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। इस सम्मेलन के आखिरी में हम भोपाल डिक्लेरेशन निकालेंगे, उसमें इनमें से कई मुद्दों की चर्चा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir, for giving a detailed insight of this Think 20 conference. This event in this venue is powered by green energy. Now, we would like to request Ambassador Sujan R. Chinoy, T20 Chair and Director General of the Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analysis, New Delhi, to set the context about the program. Namaskar. Shri Shivraj Singh Chauhan, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Suman Beri, Vice Chairperson, Niti Aayog, Shri Harsh Shringla, Chief Coordinator of G20 India, my colleague Dr. Sachin Chaturvedi, Mr. Sonobe, other distinguished guests on the dais, distinguished participants, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. As the Think 20 Chair for India, it gives me great pleasure to be here in Bhopal, which by now you would have seen is one of India's cleanest and greenest cities that seems to have already implemented in fulsome measure Prime Minister Narendra Modi's vision for lifestyle for environment. Congratulations. Your presence here, ladies and gentlemen, from different parts of the world, is a testimonial to the fact that India's G20 presidency sincerely aims to transcend all geographical barriers and limitations. In accordance with Prime Minister Modi's vision, we have given voice to the global south and also ensured gender equality. We have connected with experts around the world and across India. This approach is underscored by the overarching theme, Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family. We are meeting in an era of polycrises. All aspects of globalization are under stress, whether trade, technology, finance, movement of human resources, energy, or food. This is yet another moment for the G20 to reinvent itself, as it has done on numerous occasions facing challenges in the past. The G20 is a large and fairly representative grouping. It should not and cannot confront the existing multilateral system, nor must the G20 become the echo chamber for the existing infirmities in multilateralism. During India's presidency, it has a genuine chance to point towards a new direction driven by values, ethics, and a new morality that places the interests of future generations above ours. As the main ideas bank of the G20, our T20 engagement group has a great responsibility to shoulder over the next 8 months. We must come up with helpful ideas and suggestions for the leaders to consider. Think of the G20 as a roadside station, a place that allows one to pull over even from the midst of a heavy traffic jam or a traffic snarl on the highway. Ours is an intellectual and policy apron, a refuge, so to speak, that sits right next to the impasse. And it is still free of the burden of intractable and unbending national positions. The T20, in my view, is where we can step out of the confines
of gridlock positions in the multilateral system and infuse fresh thinking in an action-oriented manner. Our job is to think of new ways to meet the SDG targets and ensure adequate financing and technological support for resilient infrastructure and for transition towards lifestyle for environment. At COP26, Prime Minister Modi had underscored the great significance of climate adaptation, which he described as the key element of India's developmental efforts. Prime Minister Modi also proposed a single yet very potent word, life, that is lifestyle for environment, and it is the basic foundation of the concept of one earth, one family, and one future. Also, in an interlinked world, we must all move away from mindless and destructive consumption, as he had put it. Friends, humankind's current practices, both production and consumption, cannot be sustained by the Earth's fragile ecosystem. For pro-planet people, the solution lies in changing individual behavior, beginning with ourselves. As Mahatma Gandhi had said, we must be the change that we seek. Life, values, and well-being go hand in hand. And through our work in the T20, we should endeavor to lay a strong and empirical foundation. If we succeed in nudging individuals by the millions, we can nudge societies. And if we nudge societies into thinking and behaving differently, we can potentially bring about change in the global governance systems as well. Basically, it's a simple bottom-up approach, a human-centric approach, as Prime Minister Modi had put it. Obviously, the concept of life has to strike a careful balance between sustainable consumption and production and growth. It also calls for action to address the issue of the wide-ranging disparities among nations and within communities as well. Mother Nature, with its great commons, such as the air that we breathe and the water that we drink, and the forests and minerals that we deplete and exploit on a daily basis, these must all be treated with respect, and we owe this to future generations as well. Just as pandemics respect no boundaries, the impact of environmental degradation, the loss of green cover, the poison that we spew in the air, and the effluents that we release into the earth's water bodies, these will affect the world. These will affect everyone in the end, rich and poor alike, developing and developed countries alike. However, the historical cost of industrialization is stacked against latecomers, and that is why the developed world will have to do more to help the developing world make that just and equitable transition. And within the developing world, we must avoid putting an undue burden on the poor and the marginalized. As Prime Minister Modi put it at the Voice of Global South Summit last week, the need of the hour is to identify simple, scalable, and sustainable solutions that can transform our societies and economies. We must give importance to our traditional knowledge alongside advances in science and technology. For example, we must harness traditional medicine to meet the growing challenge of healthcare. We need to make dynamic efforts towards a circular economy. It emphasizes mindful consumption to reduce wastage and to provide a virtuous cycle of development. And one of the best examples in the world for life is Japan, a key strategic partner for India, which also happens quite fortuitously to be the current G7 president. And we have the T7 chair with us, Mr. Sonobe himself, present here today. That is also good reason why the T20 and the T7 must work closely together. And that is why I thank Mr. Sonobe for being with us today. Such partnerships can be built to promote South-South cooperation and triangular cooperation. For the developmental agenda to succeed, we must reconcile our differences over energy diversification in particular. Energy diversification and energy transition is a process. All forms of energy will obviously have to coexist. Blended finance and technological assistance can reduce the adverse impact of hydrocarbons and coal too, even as we surge ahead with renewables and green hydrogen. The recent approval of India's National Green Hydrogen Mission is a huge step towards making India energy independent and supporting the target of decarbonization. With these few words, my colleague, Professor Sachin Chaturvedi, and I welcome you all once again to Bhopal and thank you all very much for your patience and for your participation in these deliberations.
Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we would like to bring to your kind notice that this event in this venue is powered by green energy. Now, moving on with the program, it's an honor to invite Mr. Tetsushi Sonobe, Dean and Chief Executive Officer, Asian Development Bank of Institute, Tokyo, Japan, for the keynote address. Thank you very much, kind introduction. Honorable leaders, Your Excellencies, other distinguished speakers, thank you, think tank colleagues, and fellow researchers, ladies and gentlemen, very good morning. And, my name is Tetsushi Sonobe, Dean and CEO of Asian Development Bank Institute, the Tokyo-based think tank of Asian Development Bank. And to begin, on behalf of maybe all the participants, especially those from abroad, I'd like to express our sincere gratitude to the G20, T20, RIS, especially Professor Sachin Chaturvedi, for their great hospitality. So, which has already been revealed at the, the hearty reception at the airport, very nice hotel accommodation, and very nice dinner with beautiful night view, and tree planting event, and this very gorgeous venue. So it's a really wonderful treatment. I feel as if I became aristocrat or royal family member. Thank you very much. I really feel like I'm a part of one family. Thank you very much. And I'm here because I'm a co-chair of Task Force #1 of T20. This task force deals with issues about macroeconomics, trade, and the livelihood issues. But I have another reason to be invited here, which has already been introduced by Professor Chaturvedi and Ambassador Chinoy, kindly. I'm the lead chair of Think 7 this year. Think 7 is very new compared with Think 20. Think 20, T20 has already 10 years history, but T7 is now 2 years old. It started last year in Berlin with G7 Germany presidency, and then Professor Denis Sunoa and Professor Anna Katarina Honij were lead chairs. This year, the G7 came to Japan. So although ADBI is a multilateral organization, it is not a Japan think tank, but because of kind of global network, ADBI was asked to be the lead chair of T7. And the T7 has 3 goals. One is to address current crisis. Second is to reignite sustainable development, which has been slow during the pandemic. The third is to bridge G7 and the G20 through close collaboration between T20 and T7. And because we are think tanks, so we would like to achieve these 3 goals by bridging research and policy making. And then this third goal
the collaboration between T20 and T7 for bridging G7 and G20 is the reason, main reason why I am speaking right now. And then, of course, as you know, G7 is just part of G20, a complete subset. But nonetheless, there are sometimes kind of difficulty in working together. So it is better to find what we can, the two groups can agree and then work together, and then in what they have to work more to reconcile or find a kind of commonality. So I think it is very important, you know, opportunity and also the responsibility for think tankers to work on. So I would like to urge everyone here to think hard about what commonality we can find between G7 and G20. Like there are many. For example, one of the current crises is debt crisis, right? And then this must be solved, or this can be solved only through the good collaboration or cooperation between G7 countries and G20 emerging economy countries and the developing countries. And of course, when it comes to climate change issues, the whole, all countries in the planet have to work together. And also the circular economy and others, or the, our work against cyber crimes and those things. So lots of things must be done through the cooperation and collaboration. And we will work hard to find a good solution. And also, we will think about what's the difference between G7 and G20. Actually, the participants in T7 and T20 are essentially the same group of people. But, and maybe that's why that these participants have to think about what the difference between T7 and T20 and how, to convince the leaders to, find a good model of global governance. So we have to think how to, deliver our argument and ideas to those policy leaders in different groups. So that would be a kind of important work for think tanks. And then, but otherwise, we will enjoy this great environment in Bhopal, and then maybe refresh our mind and brain, and then we'll find a very good argument and solutions. So let's have a very productive 2 days. Thank you very much. Thank you, sir, for putting emphasis on sustainable development, multilateral system, collaboration and cooperation of the G20 countries. Now it's our pleasure to invite Mr. George Leria Adje, Regional Director for South Asia, UNICEF Nepal, for their special remarks. Thank you. Namaste. Good morning, Honorable Chief Minister, distinguished colleagues, and my dear friend, Professor Sachin. I bring you warm greetings from over 180 countries where my organization, UNICEF, works. It is indeed an honor for us to see one of our very own in South Asia, India, assume the presidency of the G20. It's a proud moment for all of us, especially in the region where I lead, a region that has over 2 billion people. We know with India in the lead, a new model will emerge. And we've heard elements of the new model. A model that puts people
at the heart of all we are talking about. A model that emphasizes the values of one earth, one family, one future. So, dear colleagues, as we all support India to lead us in this journey, there are a few thoughts that we would like all of us to embrace as we go this journey. One of them is the notion of participation, which has come out strongly. And this morning, we were privileged to have joined Chief Minister to plant trees. And it's going to stay with us for a long time. And imagine if we get many more to do that, involved through various participatory approaches to advance a new model for development. But another is what we call brain power or cognition. So as we begin this journey through the T20, we would like to mention that it should be part of what we look at. We see a great divide emerging in terms of cognition capacity of individuals and of countries. And that will undermine our effort to work towards one earth, one family, and one future. We know small investments in early childhood development, small investments in mid-childhood, small investments in adolescence help strengthen brain power. We know brain power can be a powerful, and indeed is a powerful driver of economic growth. So again, one earth, one family, one future, resting on investments in cognitive capacities of individuals and of nations. We know that with India at the helm of the G20 presidency, we have hope to build this strongly into the model that is emerging. We have overcome, or perhaps nearly overcome, the pressures that COVID-19 brought onto all of us. And we saw it play out strongly in South Asia. The response was massive. It was a triumph of science, of technology, and public policy. We saw the speed at which societies were mobilized. And we saw a combination of various schemes to get not only the vaccines out, the vaccines accepted, and to get societies embracing the challenge of the damage done to economies. So as the G20 thinks through the post-pandemic era and leads the way for a new model, and as we see the ravages on our environment, we know that we have the resources, the technology, the resources, and institutions to advance accelerated progress. In the context of the notion of us including brain power in our equation, we should remember that there are some 250 million children all over the world who are out of school. So one earth, one family, one future. We should remember that we need to advance cognitive development for some 2 billion children. We need some 2 billion women who are out of the labor force to enter. So indeed, a new model is required. A new model which formalizes more and more employment. A new model that ensures that everyone has access to some form of health insurance. A new model that ensures that child care, family support is at the center of the discussion of one earth, one family, one future.
and a new model that embraces the notion of brain power for everyone, for those LDCs, for emerging markets, and for the advanced economies. UNICEF globally and in South Asia is privileged to stand with India in this very historic moment. And we extend our support. We know that collectively there will be new thinking on the table. We know that collectively the voices from the South will be heard loud and clear. And we know that collectively we will be able to have a more balanced model for development that benefits children, young people, and their families. I thank you again, and we are looking forward to engaging in these 2 days. Thank you. Thank you, sir. I now invite Sri Harshvardhan Shringla, sir, G20 Chief Coordinator, Government of India, for his special remark, please. मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, Ambassador Sujan Chinoy, the chair of the T20 and Director General of the Manohar Parrikar Institute of Defence Studies and Analysis, Professor Sachin Chaturvedi, Director General of the Research and Information Systems, and also a key nodal point of the Think 20 India process. Ambassador of Netherlands, other ambassadors, members of the diplomatic corps, distinguished participants, friends, Namaskar. Let me begin by felicitating the Research and Information Systems in general and Professor Sachin Chaturvedi in particular for the timely initiative of hosting this important part of the Think 20 process. I'm also very happy that the RIS has chosen this clean, green, scenic and designated smart city of Bhopal to host this important G20 event. One of our broad priorities under our G20 presidency is accelerated, sustainable and inclusive growth. And in many senses, the state of Madhya Pradesh exemplifies this. Between 2015 and 2021, the state achieved a record 13% growth. And today, we are looking at over 10%, a phenomenal over 10% growth when we see all over, in many senses, recession and lowering rates of growth in the world. This, of course, conference is very important from the point of view of India's G20 presidency. After all, Think 20 is the brain trust that enables the G20 to meet its goals. Since its inception, the G20 has been able to stimulate a convergence of ideas from various think tanks and research institutions spanning varied focus areas across G20 working and engagement groups. We look forward to some meaningful discussions and recommendations and proposals from this process over the next 2 days of the conference. Friends, the world in many senses is at an inflection point, grappling with shifting power balances, geopolitical upheavals, economic recession, climate and energy crisis, and a crisis of multilateralism. These are fundamental challenges to the global order. But within these crises, we have to find opportunities. The world is looking at the G20 with hope and expectations. Our collective progress cannot be achieved without cooperation and collaboration. We need to work together to devise long-term, well-crafted responses to address these challenges. And the T20 is the forum, is the ideal forum and the best forum to ideate these. India's G20 presidency also comes at a critical time. In India, we have just commemorated the 75th anniversary of our independence. We are
beginning the journey of Amrit Kal, the 25 years that lead to the 100th anniversary of our independence. We have the objective of becoming a Viksit Bharat, a developed country by 2047. And our G20 presidency also comes at a time when India has emerged resilient in the face of the devastating COVID-19 pandemic. In our presidency, we hope to shape the agenda for global cooperation in a spirit of inclusivity and unity, values that are crucial to tackling the global challenges that confront us. There is an urgent need to revive trust and strive to find consensus on issues of green growth, sustainable development, and values for global well-being. The G20, as the largest grouping of advanced and emerging economies, can play a critical role in this endeavor. At the G20 summit at Indonesia, Bali, Indonesia, Prime Minister Modi had said that India would endeavor to make its presidency inclusive, ambitious, decisive, and result-oriented. We look forward to the support of all G20 members in making this possible in our presidency. The challenges that the world faces today has given shape to India's priorities. These include technology transformation, green development and life, accelerating and inclusive, resilient growth, multilateralism, and women-led development. Recently, last week, as a matter of fact, India convened a Global South Summit, the Voice of the Global South, at which the concerns and views of the developing world, 150 countries participated in this conference, many at the level of heads of state and government, were, I would say, sought and many opinions offered. And I think many of these are very important in the context of our G20 presidency. India is perceived to be the voice of the global south, and we will certainly take into account many of these recommendations that come forth and put them forward in the context of our G20 presidency. Our aim, of course, is to have practicable ideas which will have visible impact and gains for the larger global community. The T20 process and its recommendations from you would not only inform the G20 process, but fundamentally chart humanity's path ahead for shared progress and well-being. One of the, I think, important factors that I think T20 members should note in our presidency is the Prime Minister's vision that the G20 and India's presidency of the G20 and what it means should really percolate down to the grassroots levels in our country. Every citizen of our country should know about what this means and what the presidency stands for. And it is in this context that through a means of what we call Jan Bhagidari, which is working in a collective spirit, we intend to take this down to the grassroots levels. And in doing so, we are using many different platforms, one of which is through universities, through schools, reaching out to the youth, but also using popular festivals, using mass events like marathons, quiz competitions, and so on and so forth to get many of these ideas down to the grassroots level. And I think from that perspective, I must say that our novel scheme, which is the University Connect, which enables us to connect with universities all over the country. And at the last count, there were over 100 universities in our country that were part of the University Connect program, which enables us to inform each other of the G20, but also these universities use their outreach to send the message across and arrange events with students across the board. And I must congratulate Professor Sachin Chaturvedi for actually being the implementer of this program. He and the RIS have actually successfully reached out to universities across our country. And I think it's a very unique paradigm and an example of what you can do to really gather a collective, I would say, approach towards what is fundamentally the government's responsibility, but today has become, I would say, has involved students in every section of our society as stakeholders in this exercise. And certainly we look forward to much more of the University Connect as we go along.
I just want to, I think, cut short what would be a rather long speech to thank all of our delegates who've come from different parts of the world, from the G20 countries, but from across the world to be with us today. As I said, your views are very important to us in the way we handle our presidency, and we look forward to your collective suggestions and responses in how we can make our presidency an ambitious, inclusive and result-oriented effort. Thank you so very much. Jai Hind. Namaskar. Thank you, sir, for reiterating the importance of values, ethics, sustainable and inclusive growth in today's world and its percolation at the grassroots level. Now it's my privilege to invite Dr. Slemit Sudarshano, Deputy Minister of Political Affairs, Law, Security and Defense, Ministry of National Development Planning, Indonesia. Honorable Chief Minister, Excellency Mr. Pratik Khajela, Chief Executive Officer, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, respected Professor Sachin Chaturvedi, Director General Research and Information System for Developing Countries, and Vice Chairman Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, and Madhya Pradesh Rajya National Institution for Transforming India, Niti Ayog, respected Mr. Sri Rohan Jetley, Member, Think20 India Core Group, New Delhi, respected Ambassador Sujan R. Chinoy, T20 Chair and Director General, Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analysis, New Delhi, Excellency Mr. Tetsushi Sonobe, Dean and CEO, Asian Development Bank Institute, Tokyo, Japan, Excellency Mr. Sri Harsh Vardhan Sringla, G20 Chief Coordinator, Government of India, Excellency Mr. Sri Suman Beri, Vice Chairperson, National Institution for Transforming India, AYOH, Government of India, Excellencies, Honorable Speakers and Panelists, distinguished guests, ladies and gentlemen, very good morning. It is our pleasure to speak at this opportunity as a part of the Troika and G20 presidency. First of all, I'd like to congratulate the government of India for leadership on the Voice of the Global South Summit, as well as Presidency India in the G20. We believe with Government of India leadership, it could further create a more inclusive and balanced international development agenda that benefits for the global South. Last year, under the Indonesian G20 presidency in 2022, the G20 Development Working Group has identified several global crises and challenges that hinder the progress to achieve the SDGs agenda. The identified crises and challenges include climate change, food insecurity, and lack of access to adequate and affordable finance and technology. In dealing with getting access to the COVID vaccine, for example, Indonesia also continues to fight for equal access to vaccines for all countries.
you may aware that there was a wide gap of development between the developed and developing countries. Up to almost 70% of the world population has received at least one dose of a COVID-19 vaccine. However, only 25% of people in low income countries have received at least one dose. Indonesia's hard work so that all countries get equal access to vaccines continues to be carried out in all international forums, among other through the COVAX AMC engagement group, where we are a co-chair. At the regional level, as chair of the ASEAN Health Cooperation Sector Body for 2020 and 21, Indonesia leads and encourages various ASEAN initiatives in overcoming the pandemic and strengthening the regional health resilience mechanism. At the global level, the global health architecture must be strengthened. Indonesia assesses the importance of a new pandemic treaty so that the world is better prepared to face a pandemic. Upon these challenges, the G20 development ministers agreed to renew the commitment to reinvigorate multilateralism. Among the concrete output is the G20 roadmap for stronger recovery and resilience in developing countries. Within this roadmap, South-South Triangle cooperation has been set as one of the modalities to support the implementation of collective actions which focuses on micro, small, medium-sized enterprises, adaptive social protections, as well as low carbon and climate resilient development. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we believe that development cooperation should go beyond aid and play a catalytic role in leveraging partnerships, including through South-South Triangle cooperation. SSTC remains a strategic modality to tackling interlinked global challenges. SSTC could ensure knowledge, experiences, innovation, and proven sustainable financing approaches are scaled up across countries. At the same time, SSTC could be one of the drivers of economic development and reducing the geopolitical tensions through solidarity. Recognizing the importance of such development cooperation in the next 20 years, Indonesia will continue to put SSTC as one of the national priorities to support economic cooperation, transformation, and development. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I believe that Indonesia and India are on the same page toward accelerating the global recovery, including of the global south. We do hope initiatives brought by India to the table could strengthen the preceding outcomes of the G20 and other global efforts toward a more resilient world. As one of the co-chairs at the Global Partnership for Effective Development Cooperation, GPEDC, for 2023 until 2025, we would like to encourage India to also participate in this forum
to widen the outreach and maximize all means of cooperation for a more effective development. I think I have to stop here. Looking forward to a fruitful discussion. Thank you very much. Thank you, sir. It's an honor to invite the next speaker, Sri Suman Berry, Vice Chairman, Niti Aayog, Government of India, for his special remark. That what we are talking about is a, a change in mindset, a change in perspectives on the development process. And as an economist, as economists, we tend to very much think of policy instruments and technology. But over breakfast this morning with the Honorable Chief Minister, he indicated the importance of persuasion, messaging, and the tree planting that some of us were part of was an indicator of that. So, I do think we need to remind ourselves at this rather fraught moment in both global politics and the global environment, that where we are right now is as an outcome of a number of decisions and choices that the world has made largely since the 1970s, and that these can be reversed, but that reversing them is an act of political leadership as much as it is of technical leadership, uh, as Prime Minister Modi indicates, pro-planet people. My final point, and then I'll step aside for the Honorable Chief Minister that all of you are waiting for, um, is that for me, what is important about both the G20 and the Sustainable Development Goals is that actually they are what I might call ecumenical, which is to say that uh, neither actually divides the world into developed and developing, north or south. The G20 is a group of sovereigns that have come together to solve their own problems while recognizing their interdependence. And equally, the Sustainable Development Goals, which my institution, the Niti Aayog, is responsible for in the case of India, do not draw a distinction between rich and poor countries. It is a vision of, as it were, a shared vision of the good life for countries poor and rich. I think the important point right now is that the global system has largely failed um, the the poorer countries, relatively speaking, as as the recent report that I referred to yesterday by the World Bank pointed out. It is that the dream of convergence that has been much more threatened by the developments, say, of the last decade. And so I just want to make the point that while it is India's aspirations that we, as it were, be the voice of the global south, and there was an event for that, I do hope that the spirit of fraternity that unites both the G20 and the SDGs will also be an important part of the deliberations. So I just want to end by thanking the organizers, the T20 committee, for engaging Niti Aayog with this, wishing all of you very productive deliberations. I won't be able to stay, acknowledging the, as it were, the breadth of vision of the organizers to have included not only the core G20 countries, but the partner countries like the Netherlands and also, or the special invitees, and also, I know Bangladesh, possibly Spain as well, as part of this dialogue. So with that, thank you for your attention.
Thank you, sir. To reinforce the statement, India grows when its state grows, and the Madhya Pradesh state is continuously striving for it. Now we would like to invite Honorable Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan for the inaugural address. Distinguished guests, please note that the Honorable Chief Minister's address is in Hindi. The delegates are requested to use the translator device if needed to translate Hindi to English on channel 1. आदरणीय सुमन बेरी जी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग भारत सरकार, डॉक्टर स्लामेड सोडर सोनो जी, हमारे रक्षा मामलों के उपमंत्री इंडोनेशिया श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी, श्री तेजतुसी सोनबे जी, सुजन चिनाय जी, राजीव कुमार जी, डेनिस नोवर जी, सुश्री श्यामला गोपीनाथ जी, एम सुरेश बाबू जी, जॉर्ज लोर्थे जी, सचिन जी, जिन्होंने T20 की इस बैठक को यहां आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उपस्थित सभी मित्रों, सबसे पहले मैं भारत के हृदय प्रदेश, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश में, मतलब देश के दिल में, दिल से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से। सारा मध्य प्रदेश प्रसन्न है। आज आप यहां पधारे हैं। अभी जब तेजतुसी जी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं राजा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा नहीं, भारत गेस्ट को गॉड मानता है। अतिथि देवो भवा हमारी परंपरा है। ये भारत की परंपरा है कि मेहमान हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आप राजा नहीं, आप भगवान जैसे हमारे लिए। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और मैं सचिन जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई कमी हमारे अतिथियों के स्वागत में रहना नहीं चाहिए। आप कर भी रहे हैं। मित्रों, हम सब T20, और मुझे सचमुच में आज लग रहा है जैसे भोपाल इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गई हो। इतने लोग पधारे हैं। आप जो चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उसमें से निश्चित तौर पर अमृत निकलेगा जो पूरे देश की जनता के लिए जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विजनरी लीडर, अद्भुत नेता है। G20 की थीम जो इस बार है, वो थीम जिसका बार बार उल्लेख हुआ है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वास्तव में ये भारत का बहुत प्राचीन विचार है। देखो, दुनिया में हमने एक नहीं, 2 विश्व युद्ध देखे। आज भी शांति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद भी युद्धों का अंत नहीं है। शांति होगी कैसे? भारत का एक श्लोक मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो आज का नहीं है, हजारों साल पहले का भारत का विचार है। भारत ने कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो सारी दुनिया को ही एक परिवार मानते हैं। सारी दुनिया एक परिवार है। ये विचार दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है। और शायद प्रधानमंत्री जी ने इसलिए वन अर्थ वन फैमिली ये कॉन्सेप्ट दिया है। अभी जब आपने एकात्म धाम का यहां प्रेजेंटेशन अभी देखा, देखिए दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, भेदभाव, अब ये धरती तो वास्तव में सबके लिए बनाई। कोई भगवान को माने ना माने, आस्तिक हो नास्तिक हो, लेकिन धरती तो सबके लिए है। इस धरती पर अलग अलग चैम्बर तो हमने बना लिए। ये मेरा देश है, ये मेरे संसाधन है, ये मेरी दुनिया है, लेकिन यह सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। और ज्यादा गहराई में जाकर आप सोचें तो भारत ने ये बात हजारों साल पहले कही कि हम सब अलग नहीं है,
एक ही चेतना के अंग हैं हम। हमारे यहां कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। कई लोग ये कहते हैं कि सब में उसी परमात्मा का अंश है, भेदभाव नहीं, एक ही चेतना मनुष्य मात्र में है और केवल मनुष्य मात्र तक सीमित नहीं रही। ये चेतना और आगे बढ़ी तो भारत ने तो ये भी कहा कि प्राणियों में वही चेतना है और इसलिए हम प्राणियों की भी पूजा करते हैं। कई लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन गाय माता है, गाय की पूजा करो। देवताओं के जो अवतार हुए उनमें से प्राणियों के रूप में भी हुए, वो यही भाव है कि एक चेतना, वही चेतना प्राणियों में भी है और वही चेतना हमने मानी पेड़ पौधों में भी। इसलिए भारत है जहां पेड़ों की भी पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा करते हैं हम। हिमालय हमारे लिए देवतात्मा है। यहाँ एक पर्व होता है गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने कई वर्षों पहले कहा कि और किसी भगवान को काय को पूछते हो, ये पर्वत है, ये जहां में पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, पशुओं को चारा मिलता है, तो प्रकृति की पूजा करो। नदियों में, समुद्रों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, सूरज में, चंद्रमा में एक ही चेतना। और ये विचार अगर व्यवहारिक रूप से, और इसलिए देखो भारत ने ये कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो। भारत में बच्चे ये कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। जब कोई धार्मिक कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सारी दुनिया का कल्याण हो। ये बच्चा गाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सचमुच में ये अद्वैत का भाव सारी दुनिया से मतभेदों को मिटा सकता है और दुनिया को शांति की तरफ ले जा सकता है। मैं सारे थिंकर्स यहाँ आए, मैं विचारक नहीं हूं, मैं किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं T20 के सभी थिंक टैंक्स जो है बैठे, उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जरा इस दिशा में सोचें। आज हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, हम में सब शामिल है। कुछ देश ज्यादा कर रहे हैं, जो विकसित देश हैं उन्हें संसाधनों का दुनिया का अंधाधुंध दोहन किया है। भौतिक प्रगति की चाह में आगे निकल गए, कई पीछे रह गए। हम ये सोचें कि प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन करें। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हो तो तोड़ के खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आप आम का पेड़ ही काट दो तो इसको कहते हैं शोषण। हमने भौतिक प्रगति की चाह में प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया और जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के संकट का हम सामना कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि हम कैसे पर्यावरण को बचाएं। सचमुच में ये की है और वो सबको, सारे देशों को सोचना पड़ेगा, दुनिया को सोचना पड़ेगा कि हम इस दिशा में कैसे जाएं। और छोटे छोटे कामों के द्वारा मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व अद्भुत है। आप जानते हैं उनने दुनिया को लाइफ का कॉन्सेप्ट दिया, लाइफ। और लाइफ का अगर मतलब आप लाइफ और पंचामृत में भी उन्होंने कहा भारत 2030 तक अपनी गैर परंपरागत ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा उन्होंने कहा 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को हम रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए पूरा करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। ये भारत कह रहा है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। चौथा उन्होंने कहा 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से ज्यादा कम करेगा और पांचवा 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। उनका लाइफ का आइडिया, ये पंचामृत सचमुच में दुनिया को बचाने का मंत्र है और आज बेहद प्रासंगिक मैं इसको मानता हूं। अब ये सदी हमको धरती को समर्पित करना चाहिए। एक ग्रीन जीडीपी के बारे में
आप लोग विचार करें, ग्रीन जीडीपी मतलब प्रगति की बात प्रकृति के साथ। प्रकृति से उतना निकालो जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर ले, इसलिए प्रगति प्रकृति के साथ। ग्रीन फाइनेंसिंग, पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का हम कैसे प्रभावी उपयोग करें और उसके उपयोग के लिए धन की व्यवस्था में सभी देशों की भागीदारी हो। ग्रीन एनर्जी के बारे में ट्रैक 3 में आप इस पर मंथन करने जा रहे हैं, इसलिए मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। अब प्रधानमंत्री के बताए रास्ते का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश छोटी छोटी चीजों से कैसे पर्यावरण को बचाने में, धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे रहा है, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। आज आप, मैं आभारी हूं, सचिन जी आपने आमंत्रित किया और आप सब मेरे साथ पेड़ लगाने आए। पर्यावरण अगर बचाना है तो यह भाषण से नहीं होगा, स्पीच से नहीं होगा, इसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं रोज अपने दिन की शुरुआत पेड़ लगा के करूंगा, प्लांटेशन से करूंगा। और लगातार मैं पेड़ लगाता हूं और मैं अकेला नहीं लगाता, मेरे साथ अलग अलग संस्थाएं पेड़ लगाती हैं। फिर मध्य प्रदेश को हमने आह्वान किया कि भाई रोज मत लगाओ, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन जरूर एक पेड़ लगाओ। मैरिज एनिवर्सरी पर जो शादी की वर्षगांठ है उस दिन एक पेड़ लगा दो, इससे बढ़िया मैरिज एनिवर्सरी और क्या हो सकती है। बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगा दो, अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगा दो। हमने एक अंकुर पोर्टल बनाया और कहा कि पेड़ लगाओ और उस पोर्टल पर अपलोड करो। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि 1 साल से भी कम हुआ है अंकुर पोर्टल लॉन्च किए हुए। लगभग 8 महीने में 37 लाख लोगों ने अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाए और पोर्टल पर फोटो अपलोड किए। और केवल लगाने के अपलोड नहीं किए, 30 दिन बाद फिर फोटो अपलोड किया कि हमारा पेड़ ऐसा है, और 70 दिन बाद फिर अपलोड किया कि अब हमारा पेड़ ऐसा है। तो धीरे धीरे प्लांटेशन का एक वातावरण बन गया मध्य प्रदेश की धरती पर। हम केवल बात ना करें, हम अपने जीवन में उसको उतार के कुछ ना कुछ काम करके दिखाएं। 5 चीजें में, एक पेड़ लगाना, दूसरा प्रधानमंत्री जी ने कहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाने की बात उन्होंने कही। मध्य प्रदेश में हमने चलाया जलाभिषेक अभियान और उसमें हमने तय किया गांव का पानी गांव में रोकेंगे, खेत का पानी खेत में रोकेंगे। जनता के सहयोग से, केवल सरकार ने नहीं, जनता ने वाटर बॉडीज बनाना शुरू की सरकार के साथ मिलके, और हमने लगभग 4.5 लाख वाटर बॉडीज बना के कंप्लीट कर दी। छोटी बड़ी वाटर बॉडीज वाटर रिचार्जिंग का काम करने का काम कर रही है। और हर साल गर्मियों में हमारा जलाभिषेक अभियान चलता है, जहां जनता के साथ मिलके हम पानी बचाते हैं। मध्य प्रदेश में अब कैनाल इरिगेशन पे हम नहीं जा रहे, ड्रिप और स्प्रिंकलर, प्रेशराइज पाइप की प्रणाली को अपना के हम पानी कैसे बचाएं। नहीं तो वाटर लेवल की जगह इतना नीचे चला जाता है कि वो एक अलग समस्या बन जाती है। तीसरी चीज, बिजली बचाएं। हम जानते हैं थर्मल पावर प्लांट पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और इसलिए बिजली बनाना बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। यह हमने फैसला किया। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5500 मेगावाट सोलर की एनर्जी हमने उत्पादित की है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो अपने बांधों में भी पानी पर सोलर पैनल बिछा के सोलर पावर प्लांट लगा रहा है और बिजली का उत्पादन करने का काम कर रहा है। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन तब तक बिजली बचाएं। मैं खुद अगर अपने कमरे से बाहर निकलता हूं तो स्विच ऑफ खुद करता हूं। मैं वेट नहीं करता कि मेरे जाने के बाद कोई स्विच ऑफ करे। हमने ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर सकते क्या? और पूरे मध्य प्रदेश को मैंने आह्वान किया है कि फालतू बिजली नहीं जलेगी, बिजली बचाने का काम करो। एक और महत्वपूर्ण अभियान, वो इससे थोड़ा अलग है, लेकिन वो है बेटी बचाओ अभियान। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ा रहा था। बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे, बेटियां कम पैदा हो रही थी, इसलिए कि जो लोग मानते थे कि बेटा ज्यादा उपयोगी बेटा आए,
हमने एक योजना बनाई मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना, और हमने तय किया कि बेटी अगर जन्म लेगी तो जन्म के साथ ही उसके खाते में 30,000 रुपया जमा हो जाएंगे, और उसको हमने पढ़ाई से जोड़ दिया। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4,000, 11वीं और 12वीं में 6,000, कॉलेज में एडमिशन लगी तो 12,500, डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500, और जब शादी करके ससुराल जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा होगी। हमने एक योजना बनाई, मैं उसका इम्पैक्ट बता रहा हूं आपको कि मध्य प्रदेश में 2011-12 में सेक्स रेशियो था 1,000 बेटों पे 912 बेटियां, और आज वो सेक्स रेशियो बढ़ के हो गया है 1,000 बेटों पे 956 बेटियां। इसको हम बराबरी पर लाकर ही चैन की सांस लें। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स सारी सोच और मानसिकता को बदल देते हैं, और एक हर काम करो तो जन भागीदारी के साथ करो। जनता को स्वच्छता की बात हो रही है। इंदौर हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर है 6वीं बार, जो हमारी कमर्शियल कैपिटल है। भोपाल देश की राज्यों की राजधानियों में स्वच्छतम राजधानी है, लेकिन ये भी हमने बनाई तो जनता के साथ मिलके हम गांव का गौरव दिवस मनाते हैं, शहर का गौरव दिवस मनाते हैं, और उस दिन उस गांव और शहर के लोग जहां भी रहते हैं अपने गांव में आके, चाहे स्वच्छता हो, पानी बचाओ, बेटी बचाओ, आंगनबाड़ी अडॉप्ट करो, ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो पब्लिक देखिए, जनता को साथ लिए बिना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए हमने ऐसे कई इनिशिएटिव्स मध्य प्रदेश में लिए हैं। मैं स्वयं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं, और इसलिए अंत में मैं फिर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो G20 के सूत्र वाक्य के रूप में वन अर्थ, मतलब ये पृथ्वी एक है हम सब के लिए, ये पृथ्वी हम सब के लिए, भावी पीढ़ी के लिए इसका साझेदारी के साथ संरक्षण करना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। वन अर्थ, वन फैमिली, मैंने पहले ही बताया, पूरा विश्व एक परिवार है, और इसमें केवल मनुष्य नहीं बल्कि प्राणियों की भी तो चिंता करो। कई प्रजातियां खत्म होने की कगार पे हैं। अब हमारे यहाँ चीते बहुत थे हिंदुस्तान में, एक जमाने में चीते समाप्त हो गए। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी नामीबिया से फिर चीते लेके आ गए, तो मध्य प्रदेश आज टाइगर स्टेट भी है हिंदुस्तान का, लेपर्ड स्टेट भी है, क्रोकोडाइल स्टेट भी है, अब चीता स्टेट भी हो गया है, बल्चर स्टेट भी है हम, क्योंकि गिद्ध को बचाने का भी हमने काम किया है। ये धरती इनके लिए भी है, तो इनकी भी हम चिंता करें, तो सब प्राणी और पेड़ पौधों की इनकी चिंता करेंगे तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लायक बचेगी, नहीं तो एक दिन मानव जाति का अस्तित्व ही इस धरती से समाप्त हो जाएगा। तो हमारी चिंताएं, हमारे लक्ष्य सबके एक होना चाहिए, एक दूसरे पर निर्भरता और एक दूसरे पर विश्वास, यही हमारी असली ताकत है, यही हमारी दुनिया की असली ताकत है। और वन फ्यूचर, एक भविष्य, एक दूसरे से आगे निकलने की अंधी दौड़ ना लगाएं। देखो, मन में कई बार पीड़ा होती है, वेदना होती है। दुनिया के संसाधनों का 80% से ज्यादा उपयोग मुट्ठी भर लोग और मुट्ठी भर राष्ट्र करते हैं। क्यों इस दुनिया में कोई भूखा रहना चाहिए? क्यों सबके पास मकान नहीं होना चाहिए? क्यों सबके पास मिनिमम सुविधाएं नहीं होना चाहिए? ये कैसी धरती है? कई बार सोच के बेहद तकलीफ होती है मन में। और इसलिए है तो सबके लिए, तो सबके लिए कम से कम जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी हो। और इसलिए संघर्ष नहीं, समन्वय, युद्ध नहीं, शांति, प्रेम, विश्वास, जो पीछे और नीचे ले रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जंगल का कानून है, ये मनुष्यों के लिए नहीं हो सकता। अरे जिसकी जितनी जरूरत है, और अगर कोई कमजोर है तो उतना उसको प्राप्त करने में मदद करो, कमजोर को भी आगे लाने की कोशिश करो। और इसलिए कई बार जब G20 की बात आती है तो मेरा दिल कहता है, केवल G20 क्यों, दुनिया, सारी दुनिया क्यों नहीं, सारी दुनिया के देश इसमें क्यों नहीं? G7, G20, ये भी अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखे हमने। G7, G20 नहीं, सारी दुनिया एक हो जाए और कोई एक फोरम बने जहां दुनिया के सारे देश साथ आ जाए और साझा विचार करें कि कैसे सबका कल्याण हो। ये T20 की बैठक इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं एक बार फिर
आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूं और ये निवेदन करता हूं केवल मीटिंग में मत रहना, थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी, मध्य प्रदेश देखना भी। या ट्राइबल म्यूजियम बहुत अच्छा है हमारा, तो ट्राइबल म्यूजियम देखने आइए। वर्ल्ड हेरिटेज में सांची बिल्कुल पास में है, सांची देखने जाइए। और मैं तो ये कहूंगा समय मिले तो भीमबेटका की गुफाएं देखना चाहिए। 3500 साल पुरानी गुफाओं में चित्र उकेरे हुए, पेंटिंग्स बनी हुई है अलग अलग उस समय की मानव सभ्यता, वो भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और वैसे तो समय हो तो महाकाल महालोक भी आप देख सकते हैं, उज्जैन जाके एकात्म धाम जहाँ ओमकारेश्वर में बना रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, 11 टाइगर पार्क यहाँ पे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि अगर समय हो तो हमारी वाइल्ड लाइफ को भी देखिए। और टाइगर भी रिजर्व हमारे ऐसे हैं कि भोपाल में भी कई बार टाइगर गरजते हैं और कई बार उनसे हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। तो मैं तो आपको निमंत्रण दूंगा कि मध्य प्रदेश की विशेषताएं भी देख के जाइए। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चिंतन से जरूर ऐसा अमृत निकलेगा जो विश्व का कल्याण करेगा। एक बार फिर आपका स्वागत, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार, एक भविष्य और एक फ्यूचर पर प्रकाश डालने के लिए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के सही मायने बताने के लिए। Before formally ending this inaugural session, I would like to invite Dr. Indrani Varpujari, Principal Advisor, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, Bhopal, for vote of thanks.